6 महीने तो मिलते हैं ना स्कूल में भी. यू कैन मेक अ चॉइस. स्विचिंग कर सकते हो आप. 6 महीने में ना वैसे क्यों ही करेगा कोई, एक्चुअली करा है बस ना, ले। मैंने करवाया है. निकलो. नहीं होगा तुमसे. तो बस निकल लो फिर तुम. ये फिर हर एक बच्चे की बस की नहीं. देखा नहीं किस रेट से बच्चे फेल होते हैं इसके अंदर. धाड़ 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 पहला पेपर. पेरेंट्स भी पैनिक में, सब पैनिक में. ओके, सो थीटा इज इक्वल टू, सो रोटेशनल काइनेमेटिक्स, राइट. तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं. सो वी आर स्टडिंग यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, देयरफॉर वी आर अप्लाइंग, वी आर नॉट गेटिंग इनटू डेरिवेशन. इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. प्लस half alpha t square, and then omega is equal to omega naught plus alpha t. Omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha t. A, B, and C. Three equations. You can expect obviously uniform agar case hai. If it's a case of uniform acceleration, alpha is uniform. Use them. If alpha is non-uniform, which means alpha is given to be a function of angle, it is given to be 2 theta वो square. डिफरेंशिएशन। Differentiation, exactly. Or maybe it depends. If alpha is given, then this is d omega by dt is equal to 2 theta square, and you can then say, okay, I'll multiply by d theta by dt, या जो भी करना चाहते हो, divide and multiply. So both, so this is omega. तो इस साइड ओमेगा आ गया, उस साइड ओमेगा डी ओमेगा बन गया. तो दोनों तरफ इक्वेशन रिड्यूस होके omega d omega is equal to 2 theta square d theta हो गई. So now you integrate, you can get an omega square by 2 is equal to 2 theta cube by 3 plus constant. Assume at theta is equal to maybe pi by 6. Omega was given to be some value 2 pi. Substitute the value, get the constant of integration. So omega square plus 2 is equal to 2 theta cube by 3 plus that constant you have found out using some condition in the motion, gives you the equation of motion for that particular rotational motion. जैसे So सर हम क्या कहते हैं काइनेमैटिक्स इक्वेशन डेराइव करते थे हाँ, यूजिंग कैलकुलस, क्या सेम ही सेम है? सेम 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 वर्बटम, एक एक वर्ड सेम है. Not a line difference is बस there. लेटर्स चेंज कर दिए। That's all. So if you know that, you can do this also. At t equal to 0, omega is equal to फिर omega ऐसे तो naught. सबकी भी लाइक वैसी ही कर ले जैसे हमने लाइक उसकी की थी Can, काइनेमैटिक्स की। yes. So the kind of questions that come, for example, let's talk about the question. So you have torque which is given to you, and you know torque by now is the rotational aspect of. So torque is given to be okay. Some constant torque is applied, which means the acceleration produced will be constant. So some constant torque is applied on a body, and it's a wheel. So the omega, the number of turns it takes. So theta 100 रेडियंस. टी कितना लगा उसके अंदर घूमने में? 10 सेकेंड्स. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. तो एक आपके पास एक सर्कल है या सम बॉडी है विच इज अ व्हील. ओके, सो दिस इज योर व्हील. सो यू अप्लाई टॉर्क ऑन इट. इसको घुमाने के लिए, जैसे बच्चे घुमाने के लिए लगाते हैं टॉर्क ऐसे सड़क पे टायर के ऊपर. सो दे अप्लाई अ टॉर्क हियर. सो इट रोटेट्स. It covers 400 radians in 10 seconds starting from rest. Question is, what is the angular acceleration of this motion? Alpha बताओ कितना है? B, please tell me what is the, if I change the torque, if I continuously apply this torque, मैं लगाता रहता हूँ उसके ऊपर टॉर्क उसको मैं मतलब एक्सेलरेशन मेंटेन रखता हूँ. अब सिर्फ टाइम ही बढ़ा सकता हूँ मैं. तो मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. 20 सेकेंड्स के बाद what will be my omega final? That simple a question. I think this is no brainer. So अल्फा इज torque, द एक्सेलरेशन है ना? angular acceleration, which you need to find out given a lot of information about द the फर्स्ट motion. इक्वेशन Ji, सर वो क्या कहते हैं? these three questions are available to you to solve. सर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है? Same, right? Logic in your mind is same.
V फाइनल के लिए सर थर्ड इक्वेशन। यस। तो निकाल लो फिर मैं कैलकुलेट करके। जी और रेडियंस रेडियंस में ही रहना ना सब कुछ। हाँ। तो अल्फा कैलकुलेट कर लिया। ओके। सर आर यू श्योर ये 2 अल्फा टी होगा, थीटा नहीं होगा? विच वन? द थर्ड इक्वेशन, सी वाली। 2as। है ना, टू टू ए टू ठीक है थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेक सेंस। Just get friendly with this, please. With this formula, one of the questions you will get is on this only. ठीक अब वो घुमा फिरा के देंगे is different, but basic is this. है। टू हाँ जी, निकाल लिया। निकाल दोनों लिया? पार्ट, दोनों पार्ट। ठीक है। So let me just share something with you, which is very interesting. Although you know it, but I think thoda sa we will need to discuss it because I think when we last time discussed, this point had to be again clarified. Just I'm pasting an image, and the focus of the image is to understand the direction of omega. Remember, I told you omega and alpha both are vectors actually. यस सर। ये दिख रहा है ये? Can you see the figure now? हाँ जी। So look at the various things. Tangential velocity is there. So it's a wheel. It is undergoing an angular motion. Rotation is happening. There is an axis being shown. दिख रहा है axis? हाँ जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। Right. Okay. So you can see that, right? Let me just tell you about how do you decide the direction of omega, which is very important. So omega is just not clockwise, anti-clockwise. Actually, the direction has to be decided with a certain. So, जो आपकी angular speed actually है. So you know the omega when you have written all these formulas. Omega, right? Some people will say, okay, this is angular speed. It is because you're dealing with magnitude indeed, right? So, but what about the term like angular velocity? Okay, so if you hear angular velocity, you're gonna say, yeah, I know about angular speed, but what is angular velocity? What happens to this? Okay, so omega becomes a vector now. And so therefore, what is the direction of omega? So remember the rule. The axis of rotation is the direction of the angular velocity. If you are moving clockwise, that means you are the angular velocity is going to point away from the axis of rotation. But if your object is rotating anti-clockwise,
घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में, then the angular velocity points towards the axis of rotation. Let me write it, okay, so that it is clear in your head also. If you are in the, so direction of the angular velocity is along what? Axis of rotation. So if you see an angular velocity, the direction of angular velocity is in along this direction. ना इसका क्या मतलब है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन क्या है? तो दो तरह से आप बॉडी को रोटेट कर सकते हो, क्लॉकवाइज, और दूसरा आप इसको रोटेट कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? Now you have to decide, so if the object is rotating in clockwise direction, okay, so it is clockwise, then the direction of angular velocity along the axis of rotation is away. ठीक है? The body which is rotating anti-clockwise, counterclockwise, the angular velocity will point towards the axis of rotation. So if you're anti-clockwise or counterclockwise, one and the same thing, then your omega will be towards the axis of rotation. Clockwise में away from. ओहो, फिर ये शुरू हो गया. वेट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ये अपने आप ही हो रहा है. अब रब हो गया, सॉरी. Is it something strikes you? The direction of the angular velocity is along the axis of rotation. या तो दूर होगी इससे, या it will point towards you along the axis of rotation. If the object is rotating clockwise, then the angular velocity points away from you. Okay. If the object is rotating counterclockwise, the angular velocity points towards you. ये तो मतलब वो हो गया ना, कहते राइट हैंड थंब रूल. जी. Sorry, this is along the axis of omega will be along the x-axis directed towards you. So omega also, if you see I, J, K or something written, don't get shocked, because अगर एक body XY coordinate system के अंदर wheel है and it is moving like this, you know, then the axis is this, so you may get a I, J, K for omega. So don't get shocked कि omega तो यार था ही नहीं. Omega is actually a vector. It is not a scalar. Omega's velocity is a vector. Omega's angular speed is a scalar without just a magnitude of that. So that's a difference. Be very clear that you're dealing with omega is a vector actually. कई क्वेश्चंस में डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है, इसलिए बता रहा हूँ. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आपको देखना पड़ता है. इज द एक्सिस मूविंग टुवर्ड्स यू, आई मीन बाहर आ रहा है, आपके मुंह की तरफ आ रहा है, या वो अंदर की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम यू. तो देखना पड़ेगा आपको क्या उसका आप नाम रखोगे फिर. ओके. Okay, so number of revolutions, I think you can do it. Angular, I think ये तो आता है आपको. Okay, did we discuss torque? No. नहीं. No, okay. So let's discuss torque. Very, very important. Torque is the impact of
जो फोर्स का रोटेशन का इम्पैक्ट है, किसी चीज को घुमाने की कैपेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क. Torque is a capability of force to produce turning effect. So if you have, for example, this is a stone which is lying on the ground. यहाँ पे इसको इधर से नहीं, आप इधर से इसको धक्का देते हो, ये स्टोन ऊपर आके इधर आ जाता है. comes here, comes here, okay? ऐसे तो ये आपने लगाई तो फोर्स है, बट वो फोर्स ने क्या इफेक्ट दिया? टर्निंग इफेक्ट दिया. और सीधा कर लोगे तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा ये पत्थर ऐसे सीधा, राइट? सो दिस विल लुक लाइक दिस. सो व्हाट यू हैव डन इज यू बीन शो सम turning, right, which is a key word here. Turning is visible. Okay, some angular motion is visible around this axis. So you need to have a axis also. Now imagine you somebody tells you इसको rotate करना है, but please apply your force here on the end of the stone. तो इसके अबाउट तो नहीं उठा सकोगे, फिर इधर इधर से उठ जाएगा उल्टी डायरेक्शन में इस तरफ. अभी वी पिक्ड इट क्लॉकवाइज, राइट? बट इफ समबडी सेज पिक इट क्लॉकवाइज फ्रॉम हियर, यू कांट, घूमेगा नहीं, उठ तो जाएगा. क्लॉकवाइज घुमाने के लिए यू शुड इंश्योर दैट द एक्सिस एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दे डोंट कोइंसाइड. अगर एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही जगह पे हो गए, कांट प्रोड्यूस एनी रोटेशन. तो अगर आपका घर में डोर है, दिस इज योर डोर एंड द हिंज इज हियर, योर हैंडल इज हियर. when you apply force and this is the axis, at least there is some gap between these two, right? The line of action of force is this, and this is your axis of rotation. There is a gap between them. If there is no gap, for example, somebody says हैंडल यहाँ पे लगा लो, धक्का मारना, हैंडल को ऊपर ही रख दो, इसके हिंज के ऊपर ही. यहाँ क्यों नहीं लगाते? यहाँ से धक्का मारो, कोई टर्निंग नहीं आने वाली, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस नीड टू हैव अ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो द एक्सिस हैज टू बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द line of action of the force. That perpendicular distance is of use to us. That is what we always focus on. So therefore the definition of torque is the force multiply by the perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation. उन दोनों का perpendicular distance. कैसे? आपने एक you like again put something on the ground and you say I want to make it rotate around this axis. Okay, this is horizontally lying on the ground, so that's your ground. कुछ जमीन पे पड़ा हुआ है आपका. You want it to rotate around this axis, मतलब जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे घूमना है. तो what will you do if you come and apply your force here, और यहाँ फिक्स कर दिया आपने, पत्थर गाड़ के इसको ठोक दिया इधर ऊपर से, राइट? तो ये डंडा लगा दिया आपने यहाँ पे. इफ यू नो पुश इट हेयर, दिस विल मूव हेयर, ऐसे घूमेगा ये, राइट? नाउ व्हाट यू विल से, दिस इज माय लाइन ऑफ फोर्स. फोर्स को एक्सटेंड कर दिया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेयर एंड से ओके, सो ये तो परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा एक्चुअली, सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइक दिस. The perpendicular distance between the line of action of force, the line of action of force and the axis will tell you the force arm, which is what this is. The perpendicular distance between वर्क the डन एक तरह से तो नहीं हो गया, well, work done is a different concept, बट right? It is डायमेंशन सेम है. dimensionally they are equal. That's all. Torque is basically the turning impact of force, and work done essentially deals with the dot product of force and the displacement. इसमें displacement तो है ही नहीं कोई. So this is force into perpendicular distance. That's all. Force multiplied by perpendicular distance. किस किस के बीच में? Line of एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ये मैंने यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, मुझे एंगल ये थोड़ा 90 से बड़ा लग रहा है, तो मैंने फिर यहाँ पे जब मारा तो 90 डिग्री बना मेरा. तो मैं आई विल टेक दिस डिस्टेंस एज माई फोर्स आर्म. दरवाजे के केस में द फोर्स आर्म इज दिस, ये जो राइट एंगल ये वाला, मैंने फोर्स को एक्सटेंड कर दिया, सो दैट इज माई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड दिस इज माई परपेंडिकुलर.
इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क, all of them are one and the same thing. Dimensionally, yes, you're right. So the moment of force is taken to be positive. Moment positive, torque जो है वो positive माना जाएगा. अगर आप जो रोटेशन पैदा कर रहे हैं that is clockwise, sorry, anti-clockwise. And torque is negative if it is clockwise. ठीक है? Any doubts in your mind on torque? Sign convention and definition, the point of application and all that. Hope it is clear. Okay? Yes. Okay, let's talk about the principle of equilibrium. अब जैसे हमने static equilibrium पढ़ा था वैसे there is something called as rotational equilibrium. So a body is being subjected to multiple torques but is not rotating. So this is called as a situation of rotational equilibrium or the principle of moments. Is it bit similar to It is equilibrium of concurrent forces? statics, yes. Exactly. The जो principle like of हमने dynamics में पढ़ा. बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल. ओनली थिंग इसमें जो टेंडेंसी है रोटेशन की, वो एक तरफ वो बॉडी ऐसे रोटेट करना चाहती है लेकिन उधर से कुछ आता है जो उसको ऐसे रोटेट करना चाहता है, और हो सकता है फोर्स ज़्यादा हो, फोर्स आर्म कम हो. एक जगह पे फोर्स छोटी हो लेकिन फोर्स आर्म ज़्यादा लंबी हो. बोलते हैं ना अर्थ को हम टर्न करना उठाना चाहें अगर, इफ दिस इज कंप्लीट अर्थ एंड यू हैव अ वेरी लॉन्ग हैंडल, यू कैन प्रेस इट हेयर एंड लिफ्ट अर्थ ऑल्सो. जैसे कि वो पत्थर को उठाते हैं ऐसे नीचे डाल देते हैं और उसको मारते हैं तो पत्थर ऊपर हो जाता है क्योंकि टॉक लगा लिया आपने. यहाँ पे आपने पत्थर ही मान लो इसको, तो प्रेस इट हेयर, प्रेस इट हेयर, ये पत्थर ऊपर चला जाएगा. तो ये बेसिकली अर्थ को भी आप हिला सकते हो अगर आप यू हैव दैट लॉन्ग रॉड, वो चाहिए आपको. सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज व्हेन द बॉडी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू मल्टीपल टॉर्क्स but is still not moving, because the simplest example is this, right? So you have this this is fixed on some stand and now you're applying some weights, टांग रखे हैं आपने, and तो वो जो सीसा होता है बच्चे जिसमें खेलते हैं, एक बच्चा आगे आ गया तो उसका फोर्स आर्म छोटा हो गया, right? So the torque this child is able to provide in this direction has gone down. ये बच्चा दोनों वेट बराबर थे, ये बच्चा पीछे चला गया, तो he can provide, तो the overall system will start moving in this direction. क्योंकि this clockwise torque will lose against the anti-clockwise torque, and therefore it will rotate like this. But if they are of different weights and they can adjust their masses, then you can say, okay, weight of one multiplied by the force arm of this child will be equal to m2g into force arm of the second child. So now the force arms are of different length. एक ने दूर कर लिया अपने आप को, हल्का था तो वो बार बार ऊपर जा रहा था, उसने बोला ठीक है, I can use physics, I will increase the force arm, and my product of force and force arm will go up, and therefore my torque will be higher. Any doubts? Camera band. No. Okay, no problem. Hope this is making sense. You will get some questions on this topic. Okay, equilibrium में, और equilibrium के question typically जो होते हैं वो मतलब they are some questions involve both. So you have a ladder, okay, and this ladder is now on the ground and it is put against a wall. Okay, so this is resting against a wall. And so a normal reaction is coming from here. The ladder center of mass is a weight here. There is a normal reaction coming here also. There is a friction here also. But the ladder on which the painter stands does not fall down. It stays there. So this is the weight of the painter. So painter भी हो सकता है. Okay, the painter is standing here. अरे किस डिग्री पे inclined है? कोई भी दिया होगा. Maybe it is inclined at some theta angle.
So this is your अच्छा। painter who's standing on this place. He has a weight, mg. The ladder has a weight downwards, ठीक है। and everybody is now trying to. So you have to decide कि मैं किसको एक्सेस ऑफ रोटेशन मानूंगा, फिर वहां से सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपको, पर क्योंकि टॉर्क कैसे लग रही है? अरे there is a tendency, right, to make the this ladder rotate in this direction by both the mg's. Obviously ये सेंटर से निकल रहा है, तो ये मैं अगर इसको एक्सेस मान लेता हूँ, इस पॉइंट को, तो मेरा वेट ये वाला जो है मैन का, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये तो उसको ऐसे ले जाने के चक्कर में है, धक्का मार के, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. तो दिस नॉर्मल रिएक्शन कमिंग फ्रॉम द वॉल wants to make the, अगर इक्विलिब्रियम में ना हो तो दिस नॉर्मल रिएक्शन विल डू दिस, ऐसे चला जाएगा ये. तो ये mg जो क्लॉकवाइज टॉर्क है ऐसे वाला, उसने उसको एंटी क्लॉकवाइज को, सारे बैलेंस्ड हैं सारे के सारे. ठीक है। मैंने मान लो यही मान लिया सेंटर इज द एक्सिस, इसके अराउंड आप ले रहे हो सब कुछ. तो क्या इसके बोले कंपोनेंट? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो सबका, नॉर्मल रिएक्शन का, वेट का. इसका तो टॉक कुछ नहीं होगा, बिकॉज इफ यू आर ऑन द एक्सेस एज अ फोर्स यू विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक. तो इसका तो टॉक जीरो हो गया. ये डिस्टेंस आपको दे रखा होगा, लैडर जो है दिस इज 1 मीटर 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 10 मीटर लॉन्ग. थीटा विल बी गिवन टू यू. ये वाला mg का डिस्टेंस 2 लैडर अवे है, सो 2 मीटर्स. यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस व्हिच इज दिस. अगर ये वेट है ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है. So you know this is triangle मालूम है, this is 2 meters. ठीक This है। theta is same as this theta. So ये भी निकल आएगा base. Similarly, this normal reaction, if you extend forward as a line of action, you can then draw a perpendicular from it also. अच्छा ठीक है। इसका भी perpendicular distance आ तो गया ये वाला. जो मैन का वेट है इसके कंपोनेंट्स ले लो। नहीं, कोई जरूरत नहीं ना, क्योंकि आप अपने जो फोर्स आर्म है उसके कंपोनेंट सही ले रहे हो ऑलरेडी. ठीक है। ये मैन का वेट है, उसका ओके। ये वेट इस तरफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन है. और इसकी लेंथ भी तो पता होनी चाहिए, लाइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। हाँ, ये हाइट मालूम होगी, पूरे लैडर की अगर हाइट मालूम है तो यू नो ना कितना उसका साइन थीटा कितना, ये भी पता है, ये भी पता है, और हर लैडर के जो डंडा है उसके अंदर ये भी पता है 1-1 मीटर का है. दिस इज 1 मीटर. रंग्स। यो, ठीक है। so you can apply clockwise anti-clockwise torques and make them equal and say equilibrium is maintained. ओके। We'll do these questions. Friction भी लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, राइट, म्यू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन. वो इसको इधर से ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने के चक्कर में स्टैटिक फ्रिक्शन. अच्छा, तो माइनस कर देंगे। हाँ, मतलब लिख दोगे एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज. ओके ठीक है। N2 भी अच्छा, इसको एक ऐसे ही ऐसे घुमाने के चक्कर में. ओके ठीक। ये दोनों जो है mg और n, ये इसको ऐसे घुमाने के चक्कर में. So sometimes you have to do both. You have to see in a question that I will apply the rotational equilibrium as well as I will apply the normal equilibrium जो हमारा statics में हमने पढ़ा था, दोनों. Obviously, the forces are not getting at one point. This is a rigid body. It's a big ladder. But at a particular point, अब ladder हिल तो नहीं रही ना, इधर उधर जा तो नहीं रही ना, तो you can say the center of mass पे क्या क्या forces लग रही हैं, या what are the total forces acting on the body, and then you can say because अभी ladder उड़ के ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब जो normal reaction है ये वाला, who's balancing the normal reaction? भाई weight is downwards. हाँ जी। These two weights are downwards. ये वाला नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन कोई तो बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन इधर हाँ है, जी। फ्रिक्शन ये रहा, और ये देखो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से आ रहा है, हाँ जी। यहाँ भी फ्रिक्शन होगा, मतलब मैं वॉल के साथ भी फ्रिक्शन दे देता हूँ, तो ये रहा फ्रिक्शन. ओके, तो यहाँ पर भी एक और टॉर्क आ गई। एक और टॉक आ गया यहाँ पे. तो पहले मार्क करो, फिर देखो इक्विलिब्रियम आ कहाँ के रहता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों ही आ रहे हैं. Write both the equations of linear equation, translational equilibrium as well as rotational equilibrium. They may ask you. So if this is true that both equilibriums are there, find the value of the distance of the man from the center of the ladder. X निकाल लो. ओके। Condition से निकाल ली, दो equation लिख के.
Got it? Yes, sir. Okay. Now a special type of torque which is known as couple. कपल Yeah, it is used in class 12th and क्लास 12 का है? अच्छा हाँ नहीं 12th का नहीं है, 12th में काफी नजर आएगा। अच्छा डाइपोल नजर आता है वहां पे, चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है जब चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो दीज आर योर चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दे रोटेट, ओके ओके ठीक है दे इलेक्ट्रिक रोटेट इन द बार मैग्नेट ऑल्सो रोटेट्स। ओके अगर आप एक कंपास भी ले आओगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है वो भी रोटेट करके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाती है। वहाँ पर रेड टॉर्क वाला, लग रही है हाँ वो भी टॉक ही है क्योंकि इसके ऊपर एक अर्थ जो है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, कंपास जो खुद एक बार मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट। लाइन ऑफ वो क्या है क्या कहते हैं व्हाट? लाइन ऑफ एक्शन लाइन क्या बोलते हैं इसको ये फोर्स लगती है, ये ऐसे फोर्स लगती है तो ये रोटेट करता है और ये अपने आप को अलाइन कर लेता है। इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, ये अर्थ का साउथ होगा, साउथ मैग्नेटिक। तो अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट होता है। ठीक तो अर्थ का है अगर साउथ पोल यहाँ पे मैग्नेटिक है, वेव्स होती है हाँ, तो अर्थ के अंदर भी हम मानते हैं एक बार मैग्नेट है बहुत बड़े साइज का। खैर लेट्स कम बैक टू कपल। अ कपल वुड लुक लाइक दिस। कपल So equal and opposite forces acting on a body. So this is your body. कपल मतलब दो टॉर्क्स दो टर्निंग फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड की। जैसे लाइक वो भी होता था फ्रिक्शन में भी मतलब फ्रिक्शन में टॉर्क, नहीं टॉर्क नहीं सॉरी मतलब कपल फोर्सेस फ्रिक्शन में कपल फोर्सेस मतलब मतलब क्या इक्वल हुआ? एंड ऑपोजिट Oh, that's action and reaction. You mean अच्छा third law? हाँ Third law, right? No, 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 no. This is not यस third law. What we're discussing is ये एक फोर्स 5 न्यूटन्स की है, ये भी 5 न्यूटन्स की है, and both are acting in the same direction like this. सर This is your center. This is the, you can see the line, this is their perpendicular distance. So this is a couple. Okay, so we can write it as, हम इसको जो अंग्रेजी में लिखते हैं जैसे पिछले हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ अ force, similarly we'll write movement or torque of the couple. So a couple of forces, 5 Newton and this force, they produce a torque. So it's a movement or torque of the couple. ओके Do you see that they are working like friends because ये इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है और दूसरे वाला इसको ऐसे घुमाना चाहता है। तो both are very friendly. They make the body rotate in the same direction, clockwise or anti-clockwise, depending on how you've applied it. So whenever you hear the couple, there is no contradiction. Like equilibrium is not possible because both are aiding each other, both are helping each other. It's a product of the forces and the perpendicular distance between them. ओके ठीक है? Okay. Let's talk about now the concept of, since there is so every couple, okay, or torque is also capable of producing what is called as a work done. So you can do work done, जैसे कि आप देखते हो कि you have a hydroelectric power which is water coming falling down on a turbine. The turbine rotates, so all the mgh first gets converted into mgh, the potential energy gets converted into half mv square, and then half mv square kinetic energy gets converted into rotational kinetic energy. And that rotational kinetic energy then has that magnet and the coil. The coil then cuts the magnetic field. So the energy is now in the form of magnetic field.
and is getting cut by a coil and getting converted into a electromotive force. Voltage gets generated because now you have a coil rotating in a fixed magnetic field. But this rotation is coming because mgh of water, which is stored in a dam, is released, falls, converts into half mv square. The half mv square gets converted into half I omega square. But we will talk about that. What is I? Moment of inertia. Broadly, basic definition of work done, you should know right now. So we will talk about moment of inertia in a while. So अब हम बात कर रहे हैं work done by a torque. So obviously you can make sense of it, right? So torque, work done by a torque, work done by a torque. Okay, so torque is given by force into force arm, and work done, small work done by a torque will be the force, the rotational force into displacement. Instead of displacement, use d theta. This displacement is the angular displacement. This is the torque. The Okay, rotational, for a yes, small displacement, for a correct. small So angle. integrated t into theta. So whatever angle you are, t theta 2 minus t1 is your work done by the torque. Generally, work done was Fs. और क्या Here it वैसे is इसका वैसे t. फॉर्मूला क्या है? किसका फॉर्मूला क्या है वैसे? किसका फॉर्मूला? वर्क डन बाय अ टॉर्क. ये रहा सामने लिखा t into d theta. Change तो in angle. मतलब अच्छा, बस अगर W इक्वल्स टू T इंटू थीटा भी ले सकते हैं. Yeah, can. ठीक है. Torque producing change in angle. Whatever is a change in angle. Simple, right? This is a small एंगल work तो done. वैसे भी डायमेंशनलेस से होता है ना. Huh. Angle is dimensionless, correct? ठीक. Just give me 1 second, I think. Haji. So this is the work done, and if you want to find out the power delivered, right? The wheel of the automobiles has power delivered to it coming from the engine. The fuel gets burnt and mechanical work is done and it's transferred to you. So obviously it is W T by W. So this is T multiplied by d theta divided by delta T is equal to torque multiplied by omega. Something like very similar to power is equal to force into velocity. Now the turning force multiplied by the angular velocity is the power delivered to the body. Right? So this is your angular displacement. Radians. This is your instantaneous angular velocity. Okay. Now this is let's go back to torque. Any doubt in this? ये तो straightforward है बड़ा. Manji Shitesh, any doubt in this? No, sir, not at all. Okay. So let's go back to the concept of torque again.
Okay, so we studied about torque here. Okay, and we studied that it's basically the force multiplied by the perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of force. Okay, now vector form of torque. Okay, so torque is again given by R cross F. So R represents that perpendicular distance from the line of axis, line of action of force to the axis of rotation, and this is your force. So how do you interpret this? किस direction में आप घूमोगे? R to F जाना है आपको. So if you know your R, for example, okay, you know your R, and you also know your force. Okay, so this is your R, and you're moving from R to F, for example, right? So this is the case. The angle, first of all, let's correct it. ये जो angle बने हुए हैं, ये बने हुए हैं जैसे कि vector addition हो रही है. But you have to draw the line here. R को extend करके यहाँ पे ले आओ. And now they are coterminous, which means both the tails are here. This is the angle you need to consider. R to F अगर आपको जाना है, R to F. So you are now opening the cork of the jar and you will go up. So the direction, you can see the direction of the angular displacement is anti-clockwise and the arrow is going up, and therefore the direction of your torque is visible to you. So torque is going upwards. First I drew R, okay, R, which is a perpendicular distance between the line of action of the force. So this is my line of action of the force. This is my axis. I drew a perpendicular here. This is my perpendicular. But जब मैंने R बनाया तो मुझे वो जो force थी उसके tail पे जाके लग रहा था, तो मैंने R को उतना ही आगे बना दिया क्योंकि I want both the vectors to look like this. This is my force vector. This is my R vector. The rule is R cross F. So I will do this. I will rotate it from R to F. If I do R to F, my vector goes up. This is my torque. Okay. So vector quantity, and you can see that torque is perpendicular to the plane in which F and R are there. So agar F and R, force and R are in some plane, this could be XY plane. No, ये XY plane हो गया. So दोनों F and R इसके अंदर है. The torque is upward. It is in Z plane, right? So the product vector, this is the vector product. This is not a scalar product because the answer of two products or product of two vectors is coming to out to be a third vector. So force है मान लो कोई direction में है और ये इन दोनों से जो plane बन रहा है F and R से उसके perpendicular होगा torque. So torque is perpendicular to the plane containing F and R. मतलब अगर आपके पास ये situation, your force is like this and your R is in this direction. So you say, okay, my plane looks like this. Okay, and this is my F and this is my R. So I'm moving from R to F like this. What will happen? The torque will be outward, perpendicular to the plane, 90 degree. ये 90 degree है. इस plane के perpendicular होगा torque. The plane is made up of R and F vector. Can be any shape. तो plane बनाना जरूरी है R और F का. Clear है? Yes, sir. Yeah, so this is your vector, and of course, since now vector product has come in, if you want to find the magnitude, let's go back and write the magnitude also. So the magnitude is straightforward, right? So torque is equal to magnitude of R into magnitude of F into sine theta. So theta is equal to 90 degree. Sine theta is highest, so the torque will be maximum. You will get a torque max. If you put theta is equal to 0 degree, then torque will be equal to R F sine 0 is equal to 0. No torque. Now because the angle between force and the line of and the axis of rotation is 0. You need an angle between them, otherwise it doesn't work. Okay. Okay, so if you think logically, what is happening is एक वेक्टर आपका R वेक्टर है या A वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आपका B वेक्टर है, राइट? एंड यू डूइंग A क्रॉस B. पहले तो इनको ड्रॉ ठीक तरीके से करना है. द टेल्स आर एट द सेम प्लेस. तो कर दिया.
एंड नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ऊपर से देखो ए टू बी, सो इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर आएगा तीसरा वेक्टर सी. ठीक है. If you draw again this A to B, but you do from B to A, this is going upwards. Okay. Any doubts in your mind? No, no. So therefore, if you see your door ठीक or है. anything which you open, you can apply. This is your axis of rotation. You have a handle here. एक We बंदा can आता है apply वो, torque. हाँ जी, Can apply torque. हाँ. You can apply your force like this also, right? Yes, sir. So this is a perpendicular distance between the line of force and the axis of rotation. कोई बंदा आके ऐसे लगाता है, ये फोर्स, दरवाजे पे भी टेढ़ी फोर्स, पर एक बंदा आके इस तरफ से लगाता है फोर्स और टेढ़ा लगा देता है उसको. नाउ लुक एट दिस, इफ यू ड्रॉ दिस लाइन, तो ये जो प्लेन बन रहा है एफ का और आर का, जो परपेंडिकुलर है, राइट, उसका जो परपेंडिकुलर, ये वाला जो आर है, राइट, दिस इज अ परपेंडिकुलर. अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा दरवाजे को, तिरछा टेढ़ा, राइट, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगा रहा मैं बोल रहा हूँ मैं ऐसे लगाऊंगा जी डोर को थोड़ा खोलने के लिए, तो इतना टॉक नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, बिकॉज इफेक्टिवनेस ऑफ योर थीटा विल चेंज. इफ योर थीटा इज 90, विच इज दिस पार्ट, ये 90 दिख रहा है, ये जी. एफ एंड आर के बीच में एंगल, दिस इज योर आर, दैट्स योर एफ, लुक एट द एंगल, 90 degree. Maximum torque can be produced. But the moment you twist your force and you say, I'm going to twist my force here, and I'm going to reduce this angle, so your force is now here. Your Okay. R is this. Look at this. Theta is less. ठीक है. Effectiveness कम हो जाएगी आपकी. Sin theta आ जाएगा ना. What was R F sin 90 will become R F sin of theta. Okay. Something less than theta. 90 Cos पे ही होता square. ना मैक्सिमम तो. ठीक है सर. Maximum torque. So if you want more torque, please ensure that R, which is a R vector, R vector का जो वो कंपोनेंट है जो फोर्स के परपेंडिकुलर हो, वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो. कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ अनदर एग्जाम्पल, कैन आई से ओके दिस इज माई सिचुएशन वेयर आई एम अप्लाइंग अ फोर्स हियर and this body is connected and this is my R. Somebody comes and says, okay, I am going to apply my force. I can't apply like this. I have something wrong in my hand. He comes and applies his force like this to turn Okay. this. इसको leftward यूं turn, अभी यूं दबा तो ये turn हो जाएगा ना ऐसे, but वो आके बंदा ऐसे force लगा देता है. Now look at this force and look at this R. Okay, if I draw the line of action of the force like this, I can draw this as a perpendicular from the axis of rotation. ये मेरा perpendicular है. ठीक है. तो मेरा जो वो था R, essentially, oh sorry, मैंने थोड़ा ऊपर दिखा दिया. Let me redraw this so that I can show it clearly. I apply the force at the same point but at the top at an angle. ये मेरी फोर्स की, let me just use a line instead of depending on this. So मेरा फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. ठीक. ठीक है. Yes, sir. I'm just rubbing this also off so that we can see the force arm with the help of an arrow rather than depending on. तो देखो मेरा जो R था, ये मेरा R था,
अब इन दोनों के बीच में मैंने एंगल कितना ले लिया, एफ और आर के बीच में, नोट दिस। सो दिस इज माय एंगल, दिस इज माय फोर्स एंड दिस इज माय आर। तो मैं फोर्स को यहाँ यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ये मेरा आर है, ये मेरी फोर्स है, एंगल दिख रहा है ये, हाँ जी। दिस इज क्रॉस्ड 90 डिग्री, तो छोटा हो जाएगा टर्निंग इम्पैक्ट, क्योंकि आपका जो आर का कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा फिर, ये थीटा। अगर यस। ये थीटा है, दिस विल बिकम 180 माइनस थीटा। तो अब अगर मैं ये परपेंडिकुलर ये है मेरा, तो मैं निकालता हूं एफ इंटू आर साइन थीटा, मतलब आर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैन यू से दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ sorry, जी। this is which I am highlighting in the different color now. Let me use this color. Okay, can you see the red color now? या So if this is r and this is the angle, तो ये r sin 180 minus theta is equal to r sin theta, नहीं हो गया? So f into r sin theta. So actually, if you have an angle theta, you always multiply force and the component of r which is perpendicular to f. ठीक। Vector product is basically the product of the force and that component of r which is perpendicular to f. क्योंकि in this case r is straight away perpendicular to f. इस वाले में ये r है और ये f है, ये दिए हुए 90 डिग्री, बट नॉट इन दिस केस। ठीक। तो आप जब वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हो, तो आप दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब निकालते हो, तो उसमें एक वेक्टर का तो सीधा लिख देते हो आप, दूसरे वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लिखते हो। मान लो बी वेक्टर था, उसका कंपोनेंट बी साइन थीटा वो वाला कंपोनेंट होता है विच इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक। So what I have written is the magnitude of A cross B. What is the direction of A cross B? Simple. This is your A, that's your B. राइट हैंड Move रूल from लगा A ले। to B. हाँ जी, राइट हैंड थंब रूल। हाँ, ठीक है। rotate A to B. राइट हैंड थंब रूल से निकल जाएगा। Exactly. So remember this. जब मैं अब I'm going to show you one more line. Okay, so look at this line. Green. ये R था, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूज था, जो मेन आर था, लेकिन आर को हमने नहीं आर रहने दिया, उसको हिला दिया फोर्स की डायरेक्शन को, तो आर जो पुराने वाला था वो छोटा हो गया, ओ आर साइन थीटा बन गया। ठीक है। और लुक एट दिस, लेट मी ड्रॉ वन मोर। तो थोड़ा नीट सी फिगर बना दो, खिचड़ी सी लग रही है। ये कौन सा कलर नजर आ रहा है अब? ये हरा। So I'm going to change this color to black, for example. Do you see the component of r, which is this black, is r cos theta? या ये तो r sin theta हो गया ना? हाँ जी। Now r cos theta and f are in same direction. Do you see that? अगर ये मेरा r है, इसके दो कंपोनेंट मैंने बनाए, ये और ये। Now my r cos theta and f are in same direction. हैं तो एंटी पैरेलल, r cos theta is in this direction, f is in this direction. बट दोनों के बीच में एंगल 180 तो आ गया ना, एंटी पैरेलल हो गए। यस। सो ये वाला कंपोनेंट हैज नो रोल टू प्ले, इससे टॉर्क नहीं पैदा हो सकता जो ठीक। पैरेलल टू एफ होता है। आर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू एफ होता है, उसी से निकलेगा आपका टॉर्क। ठीक। दिस कंपोनेंट इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, contributes nothing. ठीक। Any doubts in your mind? ठीक है, समझ आ रहा है। Okay. So तो do you का know सौ how to calculate the vector product if you're given ijk? वेक्टर प्रोडक्ट, हाँ जी सर, वो डिटर्मिनेंट से। हाँ, आता है।
हाँ हाँ आता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको. You are given a vector R. Let me go to the thing. The ink is gone now. Let's add it. R is equal to xi plus yj plus zk. पेज 2 पे आ गए। जी. F is equal to fxi plus fyj plus fzk. If you have to find R cross F, you will write it as x डिटर्मिनेंट y sorry ijk. सर, आई कैप जे कैप और के कैप है, Right. निकाल दो मैं। हाँ ठीक है. हाँ, if you know how to write it down. One question you can expect to find the vector product, to find the direction of the torque and also the So you're writing torque, right? जी सर। Okay, good. The torque in x-axis. Then you have to write in the next torque, which is J. The torque in the y-axis, यस। so on and so forth. So 3 torques get calculated. एक मिनट, you have written, अच्छा उल्टा लिख दिया तो प्लस कर दिया उसको. ठीक है, ठीक है. And then normal fzy k times एंड कैन एक्स के एक्स, ठीक है। yes. एफ बाई How to एक्स find vector product using ijk. Confirmed question है CBSE के अंदर, मतलब स्कूल में, और यूज होता है इसका बहुत. राइट हैंड थंब रूल से या फिर आपके कॉक्सक्रू रूल से हम निकाल सकते हैं जी डायरेक्शन। हाँ कॉक्सक्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन निकाल। हाँ ठीक है. ये डायरेक्शन तो आ गई ना, क्योंकि ये वेक्टर ही आएगा. वेक्टर। आंसर तो वेक्टर में ही आ रहा है ना. हाँ जी हाँ जी। So answer is already in vectors. This is what you need to do now. Please go back and revise this whole theory before I start numericals. Because the numericals, as you see, we have done so many topics today. We have done equilibrium, we have done torque, and what else we have done? We have done kinematics of rotational motion, equilibrium, torque in vector format, काफी आज के लिए couple. इन चारों के ऊपर we will have to practice a bit before we jump into. So we have started now getting into what does a force do, what does a torque कितना start और doing. कितना वैसे खत ये लंबा end चैप्टर है का- यार, इट्स अ लॉन्ग चैप्टर. अच्छा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रैक्टिस है, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत इंडिविजुअली जोड़ने पड़ते हैं सारे के सारे टॉपिक. फिर यू विल सी व्हाट विल हैपन. अभी अभी थोड़ी सी दिल्ली दूर है, इट विल टेक सम टाइम. इट्स अ लेंदी वन. But if you know Newton's law well, it becomes slightly easy because you have some common sense in your mind. ठीक। ठीक है, but please go back. I will send you some notes on rotational motion. But you already have 2 books with you, just in case you want to refer to something else. It may help you. ओके ठीक है, ये थोड़े आज के लिए बहुत हैं टॉपिक है. We need to do some numerical practice which you will find is slightly awkward. थोड़ी सी अलग होती है.
ठीक। सी यू देन, बाय, थैंक यू वेरी मच।